અમરેલી સાવરકુંડલા નેશનલ હાઈવે પર કુદરતી આફતના પગલે વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણ ઠપ થઈ ગયો છે। ચરખડિયા ગામ નજીક ભારે વરસાદ અને પાણીના ધસમસતા પ્રવાહના કારણે નેશનલ હાઈવેના 20 ફૂટ જેટલો ભાગ વચ્ચેથી ધોવાઈ જતા રસ્તાના 2 ભાગ થઈ ગયા છે। છેલ્લા 16 કલાકથી હાઈવે બંધ હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ નક્કર કામગીરી કરવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે વાહન ચાલકોમાં ભારે રોષ છે। हाल वाहन चालकों ने चलाला थईने लांबा रूट परथी फरजियात मुसाफरी करवी पड़ी रही है। हाईवे पर बंने तरफ वाहनों की लांबी कतारों जोवा मळी रही है। मुसाफरों ने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। परिस्थितिनी हालचाल जोई 2 वाग्याथी रस्तो बंध छे अने सतत वरसाद चालू छे अने मुसाफरो पण हैरान परेशान छे। आटला कलाकथी तंत्र कोई नथी आव्युं। तंत्रने अमुक व्यक्तिए जाण करेली है, छतां पण तंत्र 2 कलाक पछी एनी माहिती लीधी है, पण हजी सुधीमां कोई कार्यवाही थई नथी अने रोड रस्तो तमाम बंध छे। आनथी कन्टिन्यू लाइन सरखड़िया लगीन अने प्लस उखरवाड़ा लगीन कन्टिन्यू वाहननी लाइन एकदार चालू छे।